me what is Securities and Exchange Board of India? What is Securities and Exchange Board of India? Sir, to control the finance of country. No. तो रिजर्व बैंक का क्या काम हो गया? अगर फाइनेंस कंपनी का वो कंट्री का की कंपनी का, व्हाट यू हैव टोल्ड? सर जैसे शेयर्स जैसे कंपनी शेयर्स देती है तो वो कंट्रोल होता है. ठीक है. इट इज द रेगुलेटरी बॉडी of to control the stock exchange. ठीक है. The selling and purchase of securities and the shares and the debentures, mutual funds, whatever. One second. ठीक है. तो Securities and Exchange Board of India is the regulatory body to control the stock exchanges, to control all the participants in the stock exchange. Can you name some participant in the stock exchange? Can you name some participant in the stock exchange? Shaleen, Vansh? No. So they are the companies who are issuing their securities. Securities means shares and debentures. ठीक है. Those companies who are issuing their shares and debentures through stock exchange, the brokers, the bankers, ठीक है, and the investors. These are some players of stock exchange. ठीक है. Players कह सकते हैं, participants कह सकते हैं. So पहले आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, तो 1980s में एक हुआ था हर्षद मेहता. मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि हर्षद मेहता के बारे में आपको पढ़ना चाहिए. आप गूगल पे जाइए, हर्षद मेहता के बारे में पढ़िए. एक वेब सीरीज भी आई है, ठीक है, स्कैम, SCAM. ठीक है. इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे फ्रॉड किए और फ्रॉड करके 1980s में करोड़ों अरबों रुपए कमाए इन्होंने. ठीक है. उसके बाद जब ये फ्रॉड पकड़े गए तो गवर्नमेंट को लगा कि हमको कुछ ऐसी एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो पूरे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करे, उनके रूल्स बनाए, एक्सेट्रा, जिससे कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना कर पाए. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने बनाया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. ये बना है 1989 में. ये एक and this has been an act is passed in the parliament and so ये कौन सी कंपनी हुई आपकी? This has been formed by a special act in the parliament. The SEBI is formed by a special act in the parliament, so it is a statutory company. ठीक है. Its powers and responsibilities has been defined in the parliamentary act, in the rules, regulation. ठीक है. तो ये कंपनी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है और शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है, रेगुलेट करती है, so that there is no fraud in the securities market. So their objectives. The overall objective of SEBI is to protect the interest of the investors and to promote the development of and regulate the securities market. There is lots of disturbance today in my house.
The overall objectives of the SEBI is to protect the interest of the investors and to promote the development of and regulate the securities market. So some important objectives are to regulate the stock exchange and the securities market to promote their orderly function. तो पहले क्या होता था, इन्वेस्टर्स के साथ बहुत सारे फ्रॉड होते थे, इंटरनल ट्रेडिंग होती थी कि मान लिए रिलायंस को अपने शेयर्स इशू करने हैं तो उन्होंने इंटरनली किसी से को बेच दिए, मार्केट में आए नहीं शेयर्स, प्राइस को कंट्रोल करते थे वो लोग। अब क्या है, ओपन मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज और ओपन मार्केट के थ्रू सारे शेयर्स को बेचना जरूरी है। तो इट रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज मार्केट to promote their orderly function, to protect the rights and interest of the investors, to prevent malpractices in the securities market, like internal trading and so on. Then to regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc. तो ये रेगुलेट करते हैं और डेवलप करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट सो दैट फेयर प्रैक्टिसेस कैन बी डन इन द बाय द इंटरमीडिएटरीज। अच्छा, देयर आर थ्री फंक्शंस, मेन फंक्शंस, these were the objectives and the main functions. One is regulatory function, protective function and development function. important है ये तीन फंक्शंस जो हैं आपके, दैट इज रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, ये आपको पूछे जाते हैं बोर्ड्स में भी, प्री बोर्ड्स में भी। ये सेबी के फंक्शंस या आपको इनडायरेक्ट वे में बताएंगे कि सेबी ने ऐसे ऐसे ये किया। अब ये बताइए ये कौन सा फंक्शन है, विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सेबी। तो रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या है, इट रजिस्टर्स ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स, यानी कोई रजिस्ट्रेट बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर नहीं आ सकता है। इट रजिस्टर्स ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इट रजिस्टर्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड। इट रेगुलेट्स स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स एक्सेट्रा। Then it leaves fee or other charges for carrying out the purpose of the SEBI Act. ठीक है? And it calls for information by undertaking inspection, conducting inquiries, audits of stock exchange and intermediary. यानी ये सबके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, ये सबको रजिस्टर करते हैं अपने पास, बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं जा सकते यहाँ पर, और ये सबको चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम बाय इंक्वायरीज, इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएट। ठीक है? देन प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शंस, इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी ये कोशिश करते हैं कि कोई फ्रॉड ना हो और कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो इन द सिक्योरिटीज मार्केट। इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। ठीक है? इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। इट अंडरटेक्स स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग रोकते हैं और ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं सो दैट द इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इट प्रमोट्स फेयर, इट
Okay, it promotes fair practices